good evening. And during my time, there were only 5 IITs. That is IIT Kharagpur, Kanpur, Madras, Bombay, and Delhi. Now there are 23, and so many NITs also. So, as he said, that I did my post-graduation from IIT Kanpur, and then I came to IIT Delhi, did my PhD in mathematics, and then postdoctoral fellowship, and then I taught engineering mathematics 1 and 2 to first year students, BTech first year. So the last so many years I am associated with TestprepKart. Yeah, just for 5-10 minutes I will be discussing. In fact, first of all, how to prepare, how do they, form the questions in IIT JEE, for example. Now, as he said, there are 75 questions. Out of 75, 25 physics, 25 chemistry, 25 mathematics. 25 mathematics, there are 20 questions which are multiple choice question, and 5 are, just you have to give the answer. Now, what they do is that in normal, multiple choice question, if my answer is 10, okay, and suppose I have to give that answer as a option C, then other A, B and D will be something like 5, 15, 20, like that. But not in JEE. JEE, what they do is that if my answer is, one of the answer is suppose 10, okay, and I have given the option C. Now what they will do is, in fact my professor, my mathematics guide, once he prepared, like entire JEE exam, he was the head of the JEE exam for conducting that. Now what he did is, what they do is now actually, that, if some concept is missing, there is some problem in a concept, then you will get answer A. It's not like put A, B, D something, if C is correct. You get all answer, right? Yes. So you can get answer A also, B also, C is correct answer, and you can get D also. So that's, the moment you make a small mistake in the concepts, you will get some answer. And what students do, the moment उनको कोई आंसर मिला, जैसे 5 मिला उन्होंने कोई conceptually mistake कर दिया, they will immediately jump के I got 5 and there is an option A 5, so it's 100% correct. That's not so. So what I am trying to tell, some 2 or 3 conceptual mistakes which I observed, in fact, in Jubail also, and here also, one of the students yesterday he came, Swada also came. The concept is that suppose a prime number, I am taking only small examples so that it should not be boring. So suppose, what is a prime number? So prime number is a one which is divisible by itself or by 1. Okay. For example, if I have, say for example 8. Now 8 is not a prime number. Why? Because it is divisible by 2 also, 4 also, apart from 1 and 8. Okay. Now what about 3? 3 is divisible by 1 and 3 only. So 3 is a prime number. Unfortunately, 1 also fits into it, because 1 is divisible by 1 as well as itself, but 1 is not a prime number. So the smallest prime number is 2. So yesterday when I asked one student, he came and I said that, okay, if you throw a die, small question, and what is the probability that you will get a prime number? He says 1, 2, 3, 5, so answer is 4 by 6. I said it's wrong, because 1 is not a prime number. So conceptually, if you are missing something, that will definitely be, there will be a problem in JEE, Another example is pi. About, I think, in Jubail, about 70% of the students, they give wrong answer. I said, what is a rational number? So he said that rational number, students of course, they described rational number as a number which is of the form p by q, correct? Where q is not equal to 0 and p and q are integers. I said, alright. I said, what about pi? So he said pi is 22 by 7, and because 22 and 7 both are integers, and therefore pi is a rational number. So wrong, 70% of the students. Now, the problem is that 22 by 7 is not the value of pi, it's just approximate value. 22 by 7 or 3.14 is just an approximate value so that you can get some answer. So that's why they always write in the bracket that take pi as 22 by 7. But slowly, what students do, they understand, they think that pi is 22 by 7. And that's again a problem. Now, if I go slightly higher, square root. Most confusing thing is square root.
Now, if I ask you what is the square root of 9? Now, square root of 9 is 3 and minus 3. Okay, where 3 is the principal value and minus 3 is the other value. Why? Because if I take square of 3, that will be 9. If I take square of minus 3, that is also 9. However, the symbol this, when we put this symbol, that means only the principal value, not both the values. So if I say square root of 9, if I put that symbol and put a 9 inside that symbol, and then if I ask you, then the answer should be 3. And if it's a word, if it's a sentence that what is the square root of 9, then there are two answers. One is the principal value, another is minus 3. So again, the matter of confusion, a lot of confusion. Okay. And then last thing, of course, is, say for example, square root of AB. What is square root of AB? Square root of AB is equal to square root of A into square root of B. For example, 36. Square root of 4 into 9 is 36. So square root of 36 is 6. Square root of 4 is 2. Square root of 9 is 3. So 3 into 2 is also 6. So both are same. Right? Square root of AB is equal to square root of A into square root of B. Now this is correct only in certain situations. Square root of AB is not square root of A into square root of B universally. If A and B both are positive, then it's okay. But if A and B are negative, then you will have problems. It's a simple example. Of course, there is no board, so just I'll try. That 1 is equal to square root of 1. Now 1 is square root of 1, so I can write it as square root of minus 1 into minus 1. Minus 1 into minus 1 is 1. Now that will be square root of minus 1 into square root of minus 1. If I use this square root formula wrongly, which is not not valid for this particular situation, you will get I into I, and that is minus 1. So I started with 1, which is square root of 1, wrote it as square root of minus 1 into minus 1, that is I into I, that is minus 1. So my 1 is equal to minus 1, that means 2 is equal to 0. Okay, so because I am applying some formula which is basically not meant for that particular situation, that is basically valid only when A and B both are greater than or equal to 0. So these are simple examples so that you can understand the things. In every topic, actually, each and every topic, you have this kind of thing, where certain concepts are there. एंड जेई नॉट के बहुत बड़ी कोई चीज हो गई, जेई में बड़ा टफ क्वेश्चंस आ गए और वो सब कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी. लेकिन अगर कॉन्सेप्ट कहीं मिसिंग है, अगर कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक के, तब फिर डेफिनेटली आपका आंसर जो आ जाएगा जरूर ए और बी और डी में से सी. मतलब मैं नहीं कह रहा कि सी करेक्ट आंसर होगा, बट अगर सी आंसर है तो ए बी डी भी आएगा. और वो मैं दिखा सकता हूं आपको करके कुछ क्वेश्चंस को कि कब आंसर ए आएगा, कब आंसर बी आएगा, कब आंसर सी आएगा, कब आएगा डी. एक ही क्वेश्चन को 4 तरह से अगर किया जाए, ऑफ कोर्स 3 तो रॉन्ग ही होंगे. माय इशू इज कि हम लोग जो यहाँ ट्राई करते हैं और जो ऐसा कि भाई ये मेरा भी पैशन है मैथमेटिक्स पढ़ाने का, मेरे को एक्चुअल में बड़ा, जब कोई कहता है कि पाई इज रैशनल या कुछ टाइप के आंसर्स देते हैं स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम होता है कि देखिए ये बार बार एक चीज को पाई को 22/7 लिखते इनके दिमाग में चला गया कि पाई इज रैशनल, because they have applied the definition of rational, which is okay, p by q, where p and q are integers. What I'm trying to tell you is that अगर वो concepts students को repeatedly हम बताएं कि नहीं ये देखिए ये situation ठीक है, definition के हिसाब से square root of ab is square root of a into square root of b, but इसकी जो validity है वो कुछ conditions में है. ऐसा नहीं कि हर ए और बी के लिए ट्रू हो जाएगा. जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर सीख रहे हैं और उसमें आप जान देंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज आई समथिंग इनटू आई, तो यहाँ ये प्रॉब्लम होगा. ये कम्युनिकेट करना है स्टूडेंट्स को, ये सारे, ये तो मैंने बहुत छोटे बताया आपको 3-4, बट ये चीज कम्युनिकेट करना है स्टूडेंट्स को हर टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीबीएसई में इसलिए नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के में ज्यादातर, हालांकि अभी इन्होंने, you must be knowing that there are 20 A section में there are 20 questions और multiple choice question, 1 mark each. Now उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ जाए इसका अब, बट अभी तक 4 या 5 क्वेश्चंस होते थे मल्टीपल चॉइस, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली वो नहीं था. आइडिया हमारा क्या है कि अगर हमने सारे टॉपिक लिए 28 जितने भी टॉपिक्स हैं आईआईटी के, और उसमें हर टॉपिक में मेरे पास मान लीजिए
10-12 एक्चुअली सारा चीजें एकदम से नहीं पता है। ऐसा नहीं कि मैं एक लेक्चर में सारे आपके जो है वो मिसकंसेप्शंस और ये जो सारा कुछ है खत्म कर सकता हूँ। जब टॉपिक आता है तब भी हमारे भी दिमाग में तभी आएगा। और अगर हमने ये चीजें खत्म कर दी आपके दिमाग, स्टूडेंट्स के दिमाग से कि भाई ये देखो ये रास्ता बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कभी मत कर देना। सिमिलरली छोटा सा और मैं एग्जाम्पल, क्योंकि टाइम हो रहा है, तो x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, मैंने पूछा काफी स्टूडेंट्स है, x इंटू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, उसमें x को x से काटना x माइनस वन आंसर आ जाएगा। टोटली रॉन्ग, बिकॉज x को x से जो काटा आपने वो ऐसे नहीं काट सकते अनलेस यू नो दे हैव गिवन दैट x इज नॉट इक्वल टू 0। वही मैंने बताया कि हर फॉर्मूले में, हर कैंसिलेशन के साथ कई बार क्या है कि आपने कैंसिल कर दिया और एक रूट आपने मिस कर दिया एक्चुअली कैंसिल करने की वजह से, या दोनों साइड से आपने कैंसिल कर दिया। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, आपने एक पॉइंट करके एक आपने रूट खत्म कर दिया, या कभी स्क्वायर कर दिया दोनों साइड से, या लॉगरिथमिक, अगर यहाँ 11th के स्टूडेंट्स होंगे 12th के तो लॉग का उनको पता ही होगा कि लॉग भी बड़ा ट्रिकी है, ठीक है। एनीवे बहुत सारा बहुत लेंथी हो जाएगा डिस्कशन, बट इतना मैं सिर्फ कम्युनिकेट करना चाह रहा था बेसिकली आपको कि जेई में जो हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं आईआईटी लेवल पर, वो आइडिया यही रहता है बेसिकली कि ऑप्शंस ऐसे दिए जाएं कि जहां कॉन्सेप्ट जैसे मिस हुआ वो आपका आंसर स्टूडेंट का जरूर आ जाएगा, वो चारों में से कोई ना कोई, लेकिन वो जरूर नहीं कि वो करेक्ट हो। जब सारे ये तो मैंने जस्ट आपको डायरेक्ट एग्जांपल दिया, जब कोई क्वेश्चन होगा उसमें बीच में 2 या 3 बार ऐसी चीजें भी आएंगी जहां पर कि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, कैंसिल नहीं करना एंड ऑल दैट, राइट। सो ये मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो हम लोग जो यहाँ पर टेस्ट प्रेप कार्ट में, चाहे वो क्लास जो ऑनलाइन हो चाहे डायरेक्ट क्लास होती हो, अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट्स पर अगर आपके पकड़ है स्टूडेंट की और कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे के सारे, तब कोई ऐसा नहीं कि जेई में कोई बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, कुछ हो गया। छोटी ट्रिक्स जरूर हैं, डेफिनेटली देयर आर सर्टेन ट्रिक्स जो आप ओवर द पीरियड सीख जाएंगे, बट ऐसा नहीं कि कोई ऊपर से क्वेश्चन ले आए हो। ये सब क्वेश्चन सारे हमेशा डिफरेंट ही आते हैं, बट सिमिलर क्वेश्चन, जैसे बताया 30-40 क्वेश्चन तो लगभग सिमिलर ही आ जाते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट में, और वो सब दैट्स अ पॉइंट। एनी क्वेश्चन? थैंक यू सो मच।